is Arisha Irfan and my group member is Simbal Anwar. We are from Lahore College, Women University, Electrical Engineering Department. We have tried to we have tried to address a pain point of our society, and we have to try to solve it through our innovative idea. Our idea is to develop an inverter-based motor driver for air conditioners. As we all know that in market there are always available two types of inverters, two types of air conditioners. One is inverter air conditioner, and while other is non-inverter air conditioners. Inverter air conditioners are 50% more energy efficient than non-inverters. But still, inverter air conditioners, they are about 2 times more efficient, and they are still costly 2 times even more. So we have tried to solve this problem, the problem of cost. For example, the people who are already using a non-inverter air conditioners at their homes and they are paying high electricity bills, but they cannot afford to replace it with an inverter air conditioner because inverter air conditioners are expensive. So they have to pay a lot of cost for the non-inverter air conditioners, and they cannot replace it with inverter. So we have brought a solution for this. Next slide, please. The solution we are providing is our invention in this area is through transforming a non-inverting air conditioner to an inverting air conditioner by retrofitting a DC inverter-based motor driver to it. How we are doing? हम एक्चुअली ये कर रहे हैं कि जिनको हम घर में ऑलरेडी नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं, तो हम उनके साथ एक इन्वर्टर बेस्ड मोटर ड्राइवर ऐड ऑन कर देंगे, जिससे उनका जो आराम से काम डाउन। तो उसके साथ हम क्या करेंगे कि नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर जिन लोगों के घर में लगे हुए हैं उनके साथ हम इन्वर्टर बेस्ड मोटर ड्राइवर ऐड ऑन कर देंगे, रेट्रोफिट कर देंगे। तो वो क्या होगा कि वो जो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर होगा वो इन्वर्टर एयर कंडीशनर होगा, यानी कि वो 50% लेस एनर्जी कंज्यूम करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करेंगे वो एनर्जी एफिशिएंट तो होगा ही, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, यानी कि हमारी प्राइस मार्केट प्राइस से काफ़ी कम होगी। So in this way, we are providing solution to 3 main points. First is energy efficient. This is healthy solution for national grid, and other it is cost effective. It is healthy solution for people as well because it is cost effective. And the third solution we are providing is provide design to the company so that they will produce inverter based motor drivers, air conditioners in Pakistan. क्योंकि पाकिस्तान में इन्वर्टर बेस्ड एयर कंडीशनर्स इस वक्त नहीं बन रहे हैं, नॉन इन्वर्टर बेस्ड एयर कंडीशनर्स बन रहे हैं, लेकिन इन्वर्टर बेस्ड नहीं बन रहे। यही वजह है कि इन्वर्टर बेस्ड एयर कंडीशनर्स पाकिस्तान में ज़्यादा महंगे हैं। तो अगर हम ये टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड करें, जो कंपनीज बना रही है एयर कंडीशनर्स, तो इस तरीके से पाकिस्तान में भी ये चीज़ प्रोड्यूस की जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाउ वी विल डू इट? First of all, we will use high power rated MOSFETs for switching compressor motor. Then we'll use PWM switching for MOSFETs, and then we will apply algorithms, field oriented control (SVM) and park and torque algorithms for vector control of compressor motor. Then we will control the voltage to control the torque of the compressor motor. And by using microcontrollers, we will feedback the position of the rotor of the motor, and through this we will control the rotor of the motor, and so we have regulated the speed of the motor in this way. So by this methodology, we will develop our inverter-based motor driver in short. Next slide, please. These are the milestones we have to achieve during our journey. This is our final year project, so we have a span of 1 year, and we have started working on it by September 2020 by data gathering, and then in November we worked on hardware requirements and software requirements, and by December right now we are in design phase. We are designing a schematic for our and then by April 2021 we will generate our final report and we will bring our solution oriented idea to the market, inshallah. Next slide, please. Your time is up, Parisha. Just let me explain this point. Market benefits. But your time is up. Go ahead. We have this product, and we are providing this product to market is 10 times less in price as compared to our competitors providing. क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी जो इन्वर्टर बेस्ड एयर कंडीशनर्स मौजूद हैं वो तकरीबन 1 लाख या 1 लाख से अबव होते हैं, लेकिन जो हम इन्वर्टर बेस्ड मोटर ड्राइवर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि उनके एसी के साथ ही लग जाएगा जो घरों में है, तो वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार की रेंज में होगा। तो इस तरह से हम तकरीबन 10 टाइम्स लेस प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़।
और हमारी फर्दर मॉडिफिकेशन इसमें ये है कि ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी ये इन्वर्टर बेस्ड मोटर ड्राइवर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेवलप करने के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है, या ऑटोमोटिव ड्राइव्स को ड्राइव करने के लिए। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल मोटर्स हैं जिनकी सॉफ्ट स्टार्टिंग और स्मूथ रनिंग की ज़रूरत होती है, उसमें भी इन्वर्टर बेस्ड मोटर ड्राइवर्स इसी तरह ये ऐड